warm good evening to everyone. Welcome back to day two of our Python programming bootcamp, which is conducted by StuCode Future Skill Bootcamp 2026. My name is Pooja and I work in the field of educational content and technology learning. I love creating books, activities, and learning experiences that make technology fun and easy for students. Okay, so I hope all of you practiced yesterday program because today we are going to make Python even smarter. So before that, just let me have a look that about my company. At Yep Education, we believe that every child has the potential to become an innovator. Our vision is to make future ready skills accessible to every student through engaging books, projects, and learning experiences. We aim to nurture curiosity, creativity, critical thinking, and digital skills that prepare students for tomorrow's world. And we don't just teach technology, we inspire students to use technology to solve real world problems and create meaningful solutions. Together, we are building a generation of confident learners, creators, and future leaders. Okay, so just let me know in in the last day in Python, we have done that how Python could display information, store values, and perform calculations. But today, we are going to teach Python something very different. Can you think about this? Now, I am giving you a situation, just think about it. If it start raining, do you carry an umbrella every day? Give me yes or no. If you see there is a start raining, do you carry umbrella with you? Quickly give me the answer. Yes. Aparna is saying yes. Anshka, Sunil, Arav, they all are saying yes, we'll take because you have taken a decision in this. Ki if it is raining, so I will carry umbrella with me if I am going out of my house. So, same way, when you are hungry, do you eat? Do you eat when you get hungry? And if you are not hungry, you probably don't eat. Fine. See, every day we make decisions. Daily हम कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं, कोई ना कोई डिसीजंस लेते हैं. एंड टुडे वी विल टीच पाइथन टू मेक डिसीजंस टू कि कैसे हम पाइथन को सिखाएं कि कैसे किस चीज के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं. तो बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास you will learn how Python decide what to do and how it repeats task automatically for us. That is the today's agenda for us. So, if you are ready for day 2, type ready in chat quickly. Okay, Vanshika, I'll keep a note of this. Very good. So, I'm getting lots of readies. Very nice. Very nice. So, before learning something new, let's quickly check how much you remember from yesterday, those who have attended my yesterday's session. Okay, the very first question that we have done in the last class. Now see, what does print do? What does print function do? What is the purpose of the print function? Let's quickly revise what we have done in the previous class. Write word, okay. Another answers, quickly give me the answers. Type word, Aparna is saying type word, okay. It's a function in the Python language, okay. Anshika is saying it says the system to perform the task. It's a print statement, yes. It displays output on the screen. So print function is used to display output on the screen, okay. Now, next question. What is a variable? What is a variable? Yesterday, I have taken an example of variable. That how can you compare a variable with your daily life things? Quickly answer me. Yes, I'm getting answers. Yes, it's a storage box. Yes. No, Anshika, it is not used for comparing. It is a storage function for data. Yes, very good. It's a storage box. So a variable is a named storage location used to store data in the program. Okay. Which operator checks equality? Now let me check कि आपको ये याद है कि नहीं है. Quickly, give me the answer. Which operator checks equality? No, वहाँ assignment operator नहीं है. For checking the equality, we write equal to 2 times. Very good, Arav Gupta. Very good. So we write it down equal to sign 2 times. Okay? Yes, very good. Bhavishya, you have explained all the things very nicely. Very nice. Very good. Okay. Next question.
What is the output of print 25 plus 9? Give me the answer quickly. I'm checking your charts. Yes, the answer is 34. Vivkit, थोड़ा सा confusion हो गया आपको. You are writing 25 plus 9. No, beta, because we have not used quotation marks. So the answer will be, they will add the numbers. So the answer will be 34. Okay. Next question. Name one logical operator. Name one logical operator quickly. We have done the logical operators yesterday. Give me any one logical operator. No, assignment is not a logical operator, beta. Arav, no, equal to is not. Yes, Viha is correct. And, or not. They are logical operators. Very good, very good. So excellent. Look like everyone is ready for the today's lesson because we have revised what we have done in the last class. Okay. Now, yesterday Python could calculate. We have done those exercises in which Python could calculate. Today we will teach how to think. Okay. So let's see. Why do computers need decisions? Like we need decisions daily. For example, अगर हमें umbrella लेकर जानी है, is it raining? Yes, we carry it. But no, तो हम छोड़ देते हैं अगर बारिश नहीं हो रही है तो. For everything we have condition. Either that condition will be in the yes or the condition will be in the no. Fine. Like in the fan, if it is hot, so we switch on the fan and we say no and we leave it off. Same way, same goes with the study. If you have your exam tomorrow, definitely we are going to study today. Otherwise, no, play first. बट अगर पता है कि एग्जाम्स 2-3 दिन बाद है या 4 दिन बाद है या 1 महीने बाद है, so we usually do that. Give me a moment. I need. Fine. So like this way. So every condition, आप कोई भी कंडीशन लेते हो, either yes होगा या no होगा. तो उस कंडीशन पर आपके किसी ना किसी चीज के डिसीजंस जो है वो लाई करते हैं. ओके. सो द स्टेटमेंट कंप्यूटर्स ऑल्सो नीड दीज रूल्स. तो जिन स्टेटमेंट से पाइथन में प्रोग्राम बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. नॉर्मली जो हमने कल करी थी दे वर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कि वन आफ्टर द वन जो है वो हमारी स्टेटमेंट्स चल रही हैं और हमारा प्रोग्राम चलता जा रहा है कि इफ वी आर गिविंग 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स तो पहले फर्स्ट प्रिंट होगी, फिर सेकंड प्रिंट होगी, फिर थर्ड प्रिंट होगी. दोज वर कॉल्ड सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स. Now we are learning the conditional statement. In conditional statements, we are controlling the flow of program. Ki where the flow of program will go. Ki if it is true, then action A will be performed. If it is false, then action B will be performed. So like this way, we are going to learn about the conditional statements. Okay. Let's move to the next slide. What are conditional statements? Now the question arises, what are conditional statements? So conditional statements allow a program to take different actions based on different conditions. If condition is true, we'll have to take the action A. If conditions are false, we have to take the other one. So that's exactly how conditional things work. Suppose think of a school. अब अपने स्कूल के बारे में सोचो. If today is Monday, fine, you wear a Monday uniform. Fine. If today is sports day, then you wear your sports uniform. So condition पे आपने डिसीजन लिया कि जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आपने डिसीजन लिया. फाइन. सो इफ आई डोंट गिव पाइथन एनी कंडीशन, कैन इट मेक अ डिसीजन? अगर मैंने कोई कंडीशन दी ही नहीं है पाइथन को तो क्या वो डिसीजन ले पाएगा किसी भी चीज का? नो. यस. Lots of answers are coming. No, very good that you all are attentive. Very nice, very nice. Okay. So, Python never guesses. Python कभी guess नहीं करेगा. Fine. It only follows the condition we write. Fine. So, let's write our first decision making program. Okay. So, let's see. This is my first program. अब आज जो हम programs बनाएंगे उन programs को properly discuss करेंगे. With all the angles, with all the steps. Fine. आप भी जब भी पाइथन का प्रोग्राम बनाएं उस पाइथन के प्रोग्राम से you need to play with that program. Change the values, change the conditions, change the syntax, see what happen. Only then you will be able to learn a proper coding. आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो, किस तरीके से उसको वैलिडेट कर सकते हो वैल्यूज को, and then we will do that. Fine. For that, give me a moment that I am opening
the Jupyter notebook also side by side, the way we have done yesterday, so that we can check all the things side by side in our system. Okay, so just give me a moment. I'll get my desk ready for you. Okay, so this is the statement that we are doing. So I'll put it here, and I have already copied all the programs here so that we will not waste our time and we can discuss as much as possible in one class. Okay. So let's check this out. This is the first program that we need to discuss right now. Okay. Okay. Anshika is saying, ma'am, is there any other app from which we can practice Python instead of Jupyter Notebook? Yes. You can go to python.org and you can download that also. You can install that on your system. It's very easy. Step by step process is there only. Then you can use the Jupyter notebook. Then you have Colab notebook by Google, so that also you can. Arav is asking, ma'am, what is the meaning of greater than or equal to? I'll let you know. In the maths also, greater than and equal to condition comes, so this is the same condition. Okay, now I'm not answering your questions right now. I'll just explain and then I'll take your questions afterwards. Okay. Now see, if I have a question here, like marks is equals to 75 and if marks is greater than 40, print pass. Okay. So tell me the output. Tell me the output. If marks are 75, then what will be the output? Yes, the answer will be pass. ठीक है, ये में प्रोग्राम समझ आ गया कि अगर मार्क्स, अच्छा, कैन यू सी अ प्रिंट इज रिटन लाइक दिस, कि इफ के नीचे नहीं आया है प्रिंट, थोड़ा सा इंडेंट हुआ है. इंडेंटेशन मीन्स एडिंग स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, कि जब हम एक्स्ट्रा स्पेस डालते हैं बिगनिंग ऑफ द लाइन के साथ, आप ये देख सकते हो कि लाइन तो यहां आ रही है ना. आप इफ को थोड़ा पीछे भी कर सकते हो कि मार्क्स के साथ अगर आ रही है एंड बस देयर इज अ extra space if I'm writing the print statement. Any idea why I'm putting this indentation here? This is called indentation, means adding spaces at the beginning of a line. Why I'm adding? Do you have any idea about this? No? Okay, let me explain it to you. First, I think indentation is clear, that adding extra spaces at the beginning of the line. It is used to show that the line belongs to a particular block of code. ठीक है, जैसे हमने अभी कहा कि हमें if else statement पढ़नी है, कि if ये हो, अगर ये true है तो हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो. सो इसके बाद जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, दैट बिलोंग्स टू द कंडीशन इफ इट इज ट्रू. फाइन. सो बेसिकली व्हाट दे आर telling you, it helps you to identify group of statements and control the flow of the program. अगर आप ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, फाइन, तो क्या होगा? इट इज रिक्वायर्ड to write it down, but if I am not using this print statement in the indentation, what will happen? Tell me, क्या होगा? Yes, we will get error. Nothing नहीं सुनील होगा. Fine, we will get error. Now see, error कैसे आएगा? Let's see. अगर मैंने इस print statement को back कर दिया and click किया, see I'm getting the error. And which kind of error I am getting? Indentation error. No, it is not a syntax error. Syntax error तब आता है वेरिएबल नेम गलत लेते हो, कोई ऑपरेटर गलत लगाते हो, then that thing happens. Fine. But यहाँ पर क्या होता है? Syntax error नहीं है, ये indentation error है. That I am putting a indentation error. Give me a moment. Okay, let's continue. Fine. So if I'm not writing it properly, if I'm not giving the indentation, so it will show me error. So for this, I need an indentation here, and now I will run the program. It will work fine. Fine. So for the proper block of code, I need indentation. This is the way of writing the program. This also comes in the syntax also. क्यों हमने जो हमें syntax, what is syntax? Is the rule of writing the program. Fine. So this is the way we are saying. Okay. Now let's move to the next thing. Now we will discuss few questions which we will think beyond the code. So now next question, what will happen if marks is equals to 35? अगर मैं यहाँ पर 35 marks लिख दूं तो क्या हो जाएगा? Tell me the answer quickly. I'll show you also. Okay. Somebody saying fail. It will not print anything. Okay. Fail. Nothing. Okay. Pass. Let's see. देखो, पास तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज कंडीशन क्या है कि इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, और हमने अभी उसको फेल की कंडीशन तो समझाई ही नहीं है. वी हैवंट टोल्ड देम
कि जब फेल कब होता है, कंप्यूटर सिर्फ वही करेगा जो समझेगा. बट वेन आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने अगर बता दिया कि मार्क्स अगर 40 से ज्यादा है तो वो बंदा पास होगा. अदरवाइज वाली कंडीशन आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी. बीइंग अ ह्यूमन आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर 40 से अबव मार्क्स नहीं हुए तो ऑब्वियसली वो फेल है, तो हम फेल बोल सकते हैं. बट कंप्यूटर नहीं बोलेगा, पाइथन नहीं बोलेगा, बिकॉज वी हैवंट टोल्ड देम टू से. ठीक है, लेट्स सी. सो इफ आई मेक द प्रोग्राम, आई विल नॉट गेट एनी नो आउटपुट फॉर दैट, क्योंकि मैंने वो कंडीशन उसको दी ही नहीं है. फाइन. So it will not say produce any output. So if this question comes to your exam, that what will happen if marks is equals to 35, so your answer will be no output. Okay. Will anything be printed if marks is equals to 20? Tell me. If I am writing the 20 marks, then what will happen? No, it will not print anything. तो आउटपुट आएगा ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट टेलिंग देम ना कि इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर 40 से नीचे मार्क्स है तो हमने बोला ही नहीं है कि क्या करना है. ओनली वी आर गिविंग देम वन कंडीशन कि इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, ओनली देन यू विल आस्क हिम टू पास, अदरवाइज कुछ करना ही नहीं. फाइन. सो व्हाई देयर इज नो एल स्टेटमेंट? Sorry, why there is no else statement? Because this program only tells Python what to do when the condition is true. If it is false, Python simply skip the print statement. वो simply skip कर देगा उसको. Fine. What conditions add excellent? आप कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम उस कंडीशन को एक्सीलेंट माने? गिव मी द मार्क्स, आई क्रिएट द प्रोग्राम अकॉर्डिंगली. क्विकली. ओके, आरव इज सेइंग 100. फाइन, चलो मोर देन 90 दे देते हैं. Fine. If I'll say more than 90 or 98, and here I am giving condition as suppose 95 marks diye, and here I am writing down excellent. Fine. So let's say yes, it is producing the product for me as an excellent. Fine. So can the passing marks value be changed? Passing marks value change हो सकती है? Yes or no? Yes, we can change the value. We have just done that. हम change कर सकते हैं. Fine. So I hope the if statement is clear. Now let's move to the another one. Now if else statement. And now in this program we are telling them कि अगर yes हो, true करे तो ये करना, false करे तो ये करना. अब हम उनको false statement भी सिखा रहे हैं. Fine. So let's see this program. If I'm talking about this program, say age is equals to 12. If age is greater than or equal to 13, print teenager. Else print child. So what will be the output of this program? Quickly. What will be the output of this program? Child. Okay, let's see. Yes, the answer is child. But if the age is greater than 13, then it will produce teenager. Fine. Okay, let's see. What happen if age is equals to 15? Very good. So the answer will be teenager. Yes, it will print the word teenager. Okay, what happens if the age is equals to 13? Equal to 13 होगी तो क्या होगा? Yes, again it will be teenager because the condition is greater than or equal to. मतलब 13 भी और 13 से ज्यादा भी, greater than और equal to में भी वो condition में teenager ही print करेगा. Okay, why does, listen to me question, listen the question carefully. Why does age is equals to 12 go to else? True condition नहीं है ना, false जा रही है. Why it is going false? Why? Because 12 is greater than and equal to 13 is false. Because this condition age क्या है? 12. So 12 is greater than or equal to 13 condition is false. इस तरह के questions आते हैं एग्जाम में. They will not, teacher cannot give you the question just to write down the code. She can ask question from the code itself. Fine. Now what if greater than equal to sign become greater than? अब मैं equal to का sign हटा दूं and I am just giving greater than sign, and here also I am writing 13 suppose. So पहले तो 13 में वो दे रहा था, ठीक है. So now if I'll press, it's still showing child as, but 13 है, 3 बीच में आ रहा है, तो एक प्रॉपर प्रोग्राम के लिए इक्वल टू का साइन जरूरी है. फाइन. अच्छा, अब इस प्रोग्राम में एक फ्लॉज है जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है. शुड एज इज इक्वल्स टू 25 स्टिल प्रिंट टीनेजर? कि अगर मैं यहां पर एज को 25 कर दूं, स्टिल इट विल शो टीनेजर? यस और नो? यस. तो इज दैट अ राइट थिंग? क्या ये प्रोग्राम मेरा वैलिडेट है? ऑल दो सिंटेक्सली हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है, बट लॉजिकली अगर हम देखें, इफ आई पुट द एज 100, स्टिल it is going to show me
a teenager. How is that possible? है ना कि 100 एज का बंदा भी जो है वो टीनेजर है. फाइन. सो यहां पर हमें क्या करना होता है, हमें अपने प्रोग्राम को और बेटर देखना है, हमें ये दिखाना है कि और किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को लिखें कि हमारे आंसर्स वैलिडेट. फाइन. Okay, let's move to the another question. Weather checker activity. You can take the screenshot of this and you can practice it afterwards. Fine. इसमें भी मैंने यही same program इस तरीके से दिया and there are lots of questions over here. You can practice it. This is a practice activity for you all. You can take the screenshot. Okay, I'm giving, just give me thumbs up if you have taken the screenshot. If you have taken the screenshot, just give me a thumbs up. Very nice. तो दिस इज द सेम क्वेश्चन. मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है. ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर. नाउ द थर्ड वन, इफ एलिफ एल्स. फर्स्ट हम कर रहे थे ओनली इफ स्टेटमेंट, then we have done if and else statement. Now we are moving to if, elif and else statement. Now what is this? Imagine your school doesn't have only pass and fail. अभी तक तो हमने पास एंड फेल की सिचुएशन देख ली, बट सपोज इफ योर दे हैव ए प्लस प्लस, ए बी, बी प्लस, सी प्लस, डी प्लस, इसी तरीके से हमारा ग्रेड सिस्टम चलता है. एंड सो what we have to do now, we have to teach Python to handle multiple choices, multiple situations, multiple decisions. फाइन. हमें ये सारी चीजें जो है अब कंप्यूटर को और सिखानी है. फाइन. नाउ यू कैन सी इफ वी हैव टू गो फॉर द मल्टीपल situation, now we have to use this program. In this program what we are doing, we are checking the three conditions, and we can check number of conditions with the if else condition. Fine. Okay, let's check this out. Why is a printed of a plus? Let's see. अब हमारी आउटपुट क्या आएगा इसका? हमारा आउटपुट आ रहा है a. So why not a plus? The question is why a printed instead of a plus? Give me the answer quickly in the chat box. Yes, because 82 is less than 90. है ना, तो पहली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई. वेरी नाइस आरव, फॉल्स. पहली कंडीशन फॉल्स हो गई. एंड इट इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 75. So that's why in 82 we got as A. Okay, what happen if marks 95? Quickly give me the answer. Next question, what happens if marks 95? Very good, Kanak. Very good. A plus. Arav, very good. Preeti, very good. Anshika, very good. Very good. Fine. So what happen if marks is equals to 60? 60 पर क्या आ जाएगा? Let me check if I'm writing down here 60. So let's see. Keep practicing because it is less than or equal to 75. तो हमारा आ गया 60. Why is elif only checked if it is false? हमारी elif तभी क्यों आती है जब हमारी पहली कंडीशन false हो जाती है? Because Python conditions check one by one. Fine. एक एक करके वो sequential statements पे चल रहा है वो. First, it will read the marks. Okay, marks is equals to 60. Then it will go to if marks is greater than or equal to 90. Okay. If it is there, no, it is not there, it is false. Then it will move to elif. Then it will check the condition. If still the condition is not there, then again you will go there and in the last print, keep practicing. Okay. Now, how would you add a B grade category? कि अगर हम मुझे एक कैटेगरी और ऐड करनी है तो how can I add the B grade category? So for that, what we can do, we can add one more elif statement. Suppose I'll just copy this and I'll print it. I have to check the indentation properly and here I can write it down. Suppose 60. Fine. So 60 अगर किसी के हैं तो then they will get the B grade. So that's why I'm showing you कि आप multiple conditions check करा सकते हो. Fine. Let's see. Now we are getting the B grade because right now our marks is equals to 60. What my point? Clear all the three statements? All the three conditional statements are clear. Give me a thumbs up quickly. Yes, thank you very much. So these were conditional statements. If else, and if elif else. Fine, we have seen all the programs. Now let's move further. Now it's your activity. Let me do this on the full screen. It's better. You can see. Okay. Let me come to that page. Fine. Now suppose you have to build a grade system for your class. Fine. So tell me
what will be the A plus? Grade A plus किस पे देना चाहोगे आप? How many marks greater than? Quickly write down the answers. I'll write it down here. Okay, I'm getting 90 plus, 95, 96, 90 to 100. Okay, fine. So I am taking your things 91. Okay, grade A किसको देना चाहेंगे आप? Quickly tell me. Grade A. Okay, more than 85, more than 85. Okay, chalo. I'll accept. That you can decide on your own. This is your own discretion. You can decide anything. Grade B किसको मिलना चाहिए? Okay, somebody saying 75, somebody is saying 60. चलो 75 वाले को दे देते हैं. ठीक है? Okay, grade C, grade C, grade C, grade C. Okay, above 60. Fine. नहीं 50 थोड़ा नीचे हो जाएगा. Let's move to 60. And grade fail. कितने मार्क्स से कम हो कि बच्चे को हम फेल करते हैं? टेल मी. ओके, भविष्य सेइंग 10. अच्छा, ओनली 10 मार्क्स. नहीं, यहाँ पर हम सीबीएसई की बात मानेंगे कि एटलीस्ट ही हैज टू गेट 33 मार्क्स टू क्लियर देयर एग्जाम्स. Fine. Now, suppose this is the grade system in front of you. Can you create a if elif program now? Give me thumbs up if you can do it. Give me a quickly thumbs up. Yes, very nice. Very nice. Okay, fine. Fine. So let's see how we have created the conditions, and with the help of these conditions, you can create your own program. Let's move further. Now, the next topic comes. What are loops? Fine. Now, before we start a loops, I have a question. Suppose I ask you to write welcome 100 times. ठीक है, मैंने आपको कहा कि एक वर्ड लिखना है welcome 100 times. Would you enjoy doing that? Yes or no? No. है ना, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि why we are doing a repetitive work again and again and again and again. है ना? So probably not. है ना? Now think about your daily life. There are so many things that you repeat. Brushing your teeth, walking, taking attendance if ma'am is taking attendance, practicing cricket shot. करते हो ना बार बार, repetition आती है. So these all are repeated activities. And Python gives us a shortcut. कि हमने इन्हीं एक्टिविटीज को अगर करना है तो हमें एक पाइथन बहुत ही शॉर्टकट में ये सारे काम करवा देता है. दैट शॉर्टकट इज कॉल्ड लूप. बेसिकली लूप को समझने के लिए, ये एक लूप है जो हमेशा चलता रहता है, बट हमेशा नहीं चलेगा वो. इट्स नॉट फॉर एवर. वंस द कंडीशन मेट्स इट विल स्टॉप. फाइन. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं. इफ योर मदर आस्क यू टू ब्रिंग देयर पर्स. ठीक है, मम्मा आपको कहती है कि मेरा पर्स उठा के लाओ या मोबाइल उठा कर लेकर आओ. ठीक है, तो आप क्या करते हो? फर्स्ट यू विल आस्क कि मम्मा कहाँ पड़ा है, एंड समटाइम्स मम्मा विल इंस्ट्रक्ट यू कि हाँ यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से ले आओ. बट समटाइम्स शायद कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखा है, तो क्या करोगे? बट यू विल डू. हाउ विल यू सर्च फॉर इट? Yes, we will search for it. You will find it best, Preeti. How? What is the first step of doing that? Okay, Arav, check. Where you will check? कहाँ ढूंढोगे उसको? Yes, you will go to different rooms in the cupboard. First bedroom, then shelves, see in your home. Okay, पूरे घर में ढूंढेंगे. Very good. पूरे घर में ढूंढेंगे, है ना? तो एवरी रूम यू विल विजिट. आप हर कमरे में जाओगे, यहाँ ढूंढोगे, वहां ढूंढोगे. कहीं तकिए के नीचे तो नहीं है, पिलो के नीचे नहीं है, यहाँ पर अलमीरा के अंदर तो नहीं रख दिया मम्मी ने गलती से, वॉशरूम में तो नहीं छोड़ा है. तो यू विल चेक वन बाय वन. एंड दैट लूप, वो भी एक लूप है क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो उस एक्टिविटी को. बट कब तक करोगे उस एक्टिविटी को रिपीट? कब तक करोगे? अनटिल एंड अनलेस यू विल गेट इट. जब तक नहीं मिल जाता. वेरी गुड प्रीशा. प्रीशा इज राइटिंग जब तक मिल नहीं जाता. तो कंडीशन क्या हो गई कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उसको ढूंढते रहेंगे. सो दैट इज ऑल्सो अ रिपीटेड एक्टिविटी. सो लूप को समझने में ये चीज है कि अंटिल वी गेट इट हम उसको चलाते रहेंगे. सेम थिंग हमने कंप्यूटर को भी सिखाना है. फाइन. सो दैट इज द थिंग कि स्टार्ट एक्शन, उसको रिपीट करो, एंड देन यू हैव टू स्टॉप वंस द कंडीशन इज fulfilled. Yeah, the work is done. Fine. Okay. For that, we have two types of loop, for loops and while loops. In today's class, we are going to discuss the for loop. Now, let me explain you what is for loop means for you. Okay. Now, for loop, imagine I ask Python to print numbers from 0 to 4. ठीक है, आप ये प्रोग्राम यहाँ पर देख रहे हो. अब इस प्रोग्राम को मैं समझाती हूँ. फाइन. व्हाट वी आर डूइंग, इमेजिन आई आस्क पाइथन टू प्रिंट अ प्रोग्राम फ्रॉम 0 to 4. So I will write this program. Should I write 5 print statement? Fine. If I have to write, then print 0, print 1, print 2, print 3, print 4, print 5. ऐसे करना पड़ेगा मुझे, है ना? But instead of that, Python has given me a smarter way.
And what is that smarter way? This, look at this code. For I in range 5, print I. Fine. Let me explain you step by step. First of all, don't worry, it looks new. Those who have not done it earlier, but let understand it together. Don't worry. The word for, the very first word for, tells Python that we are starting a loop. For है ही एक loop procedure. तो for देखते ही Python को समझ आ जाएगा कि that we are going to start a loop. Fine. Then variable I is like a counter. वो count करता है कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. Fine. And it keeps changing its value in the program. Range 5 tells Python to generate numbers starting from 0 and stopping at 5. मैं रेंज फंक्शन अभी नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से समझाऊंगी. अभी इतना ही समझ लो कि द रेंज फंक्शन इज टेलिंग कि आपको 5 प्रिंट करना है, एंड इफ नथिंग एनी अदर वैल्यू इज नॉट गिवन विद द रेंज इन द ब्रैकेट्स, इट मीन्स दैट इज अ स्टॉप वैल्यू, एंड बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स विद द 0. ठीक है. प्रिंट आई, प्रिंट क्या है हमारा, जो हमने आई प्रिंट कराना है. तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, सो आई इन रेंज में वो सबसे पहला नंबर लेता है 0. सो इट विल 0, देन इट विल चेक कि इन रेंज 5 तक मुझे जाना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इट विल प्रिंट द नंबर. लेट मी शो यू इन द प्रोग्राम साइड बाय साइड. फाइन. तो मैं साइड बाय साइड यहाँ पे प्रोग्राम भी चला लेती हूँ so that you can have the proper look of what we are doing. We have done that. Okay, we'll discuss this later. Now, this is the program. For I in range 5, print I. So let me run the program. So it is printing 0, 1, 2, 3, 4. Fine. Okay. Why does counting starts from 0? Why does counting starts from 0? Because range stop value start 0 unless we specify another starting point. ये rule है. Very good. This is the rule that 0 unless we specify another starting point. अगर हमने कोई starting point नहीं दिया है तो it will start with the 0. How many times the loop run? कितनी बार ये loop run करा है? Quickly give me the answer. 0, 1, 2, 3, 4, 5 times. ठीक है. What if range 3 is used instead? If I'll write it down 3 here, then what will be the output? Quickly tell me in the chat. Quickly. What will be the output if I'm writing range 3? Yes, very good, Arav. 0, 1, and 2. Yes, 0, 1, and 2. Next question. What if range 10 is used? If I'm changing it to 10, then what will be the answer? 0 to 9. 0 to 9. Kanak, 0 to 10 nahi aayega. 0 to 9. Arav, very good. Fine. C. We are getting 0 to 9. What number is printed last? Which number is printed last in the program? You can see the output here also. Which number prints the last? Right now it is 9. But अगर हम initially program की बात करें तो it was 4. Got my point. चलो, quickly see the range programs now. Now range हम 3 type से use कर सकते हैं. If we'll give a single value, so start with 0, ends before stop. So if I'll say range 5, it will give me output 0, 1, 2, 3, 4. If I'll use the range start and stop, 2 values if I'm getting, I don't need to specify that it is a start value, that it is a stop value. Automatically, first value is the start value, the last value is the stop value if I'm using 2 values. So in this case, it will start with 2 and will go till last number -1. जैसे ऊपर यहां पर 5 -1 था, यहां पर 7 -1 है. फाइन. लास्ट में इफ आई एम गिविंग 3 वैल्यूज, सो स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू. स्टेप मीन्स स्किपिंग, कि स्किप करता है वो, कि 1 के बाद उसने स्किप किए 2 नंबर्स. सो 1 के बाद 1, 2, 3, फिर स्किप 4, 5. इस तरीके से हम इसको स्किप करा सकते हैं. लाइक दिस वे आई कैन आस्क देम टू प्रिंट फ्रॉम 2 to 6. And if you are writing create a program in Python for like for odd numbers, we can use this range. It is printing the odd numbers for me. Fine. If I'll take only if I'll take 3 values, so and start with 2, it will produce the output for odd numbers also. That we can adjust. Fine. Then let's see an example of start and stop that we have just discussed now. I in range 2 to 7. Fine. So let's see the code. If I am running this, so it is showing me the code 2, 3, 4, 5 and 6. Why the 7 not printed in the output? अभी समझाया मैंने. Why the 7 is not printed in the output? -1. Very good. Because range की जो भी stop value है उससे हम -1 करते हैं.
Which number appears first? Which number appears first? 2. Because we have given the starting point. हमने starting point दे दिया, that range will start from 2. Very good. How many numbers are printed in total? Count the output. कितने number print हुए? Yes, there are 5 numbers which are printed. Okay. If I start changes to 5, then what will happen? If I'll change the start to 5. So what will be the output? Very good. The output will be 5 and 6 are excellent. 5 and 6. Okay. What if start and stop are the same numbers? Very good. A very good question. If the start and the stop are same, what will happen? Tell me quickly. Ara, very good. Ara is saying nothing will print. Okay. Let's see. Yes. Nothing will be there because there is no number to generate. So fine. So let's see the another program now in which we are skipping the numbers. ठीक है. अब हम इसमें अभी हमने एग्जाम्पल देखा तो हम इसका एक लाइव प्रोग्राम देखते हैं इन विच वी आर स्किपिंग द नंबर्स. इफ वी आर टेकिंग स्टेप 2 सो इट स्किप इवन नंबर्स. फाइन. सो टेल मी द आउटपुट. क्या आउटपुट आएगी इसकी फॉर आई इन रेंज? सो स्टार्टिंग वैल्यू इज 1, लास्ट वैल्यू इज 10 एंड 2 इज द skip value. दो skip करने हैं. Yes. Let me take this program upstairs so that I can run this. Okay, let me थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको. Fine. So I am getting the number this. So it is presenting 1, 3, 5, 6 and 7 for me. Fine. So it is presenting. Okay. So let's have few questions on it. Why are only odd numbers printed? सिर्फ odd numbers ही क्यों print हुए? Because the loop start at 1. ठीक है. Loop 1 पे start हुआ and it goes on 2 times उसने कर दिया. ठीक है. तो हमारे odd numbers print हुए. Okay. What does the step value 2 means? So it means yes, we skip 2 times. Very good. Because Python jumps by 2 times every time. Very nice. Very nice. Okay. Next question. What if steps become 3? Let's try. If I am writing it 3. So what will be the output? Let's check the output. So the output will be 1, 4, 7. Fine. How can we print even number instead? अब मुझे इसी प्रोग्राम को चेंज करना है. I'm not writing the another program. I'm changing some values and now it will print even numbers for me. So what will I do? I will start with 2. If I'll start with 2 and till 11, क्योंकि चलो मुझे अगर 10 तक प्रिंट कराना है तो मैं इसको 11 कर दूंगी बिकॉज इट विल टेक -1 पे रुक जाएगा. एंड skip will be कितना skip करवाएं? Skip will be 2 itself. Fine. So if I'll run this program, so it is presenting the even numbers to me. तो आपने देखा कैसे हमने एक ऑड नंबर के प्रोग्राम को इवन नंबर प्रोग्राम जनरेटर में कन्वर्ट कर दिया बस जस्ट बाय टेलिंग द चेंजिंग द वैल्यूज. ओके. सो कैन वी प्रिंट मल्टीप्लाई ऑफ 5 यूजिंग दीज स्टेप्स? सेम प्रोग्राम में वी हैव टू चेंज द वैल्यूज एंड आई वांट टू प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 5 यूजिंग दिस स्टेप. टेल मी व्हाट विल बी द स्टार्ट वैल्यू. एक एक करके बताओ. स्टार्ट वैल्यू क्या रखूं? ओके. प्रीति, आई एम टेकिंग योर आंसर 5. जेड के मैम 5 ले लीजिए. देन एटलीस्ट 5 मल्टीपल्स तो प्रिंट करा ही देते हैं, है ना. सो आई टेक 26 जहां पर स्टॉप करे एंड आई विल टेक 5 स्टेप्स. 5 स्किप करेंगे. फाइन. सो लेट्स सी इफ आई एम गेटिंग द आंसर एज multiples of 5. Yes, I am getting. See, from just 2 lines of code हमने इसको इवन भी बना लिया, इसको ऑड भी बना दिया, हमने इसको मल्टीपल्स भी बना दिया. फाइन. वेरी नाइस. एंजॉयड. गिव मी अ थम्स अप इफ यू एंजॉयड दिस. गिव मी अ थम्स अप क्विकली. वेरी नाइस. वेरी नाइस. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ द काउंटडाउन प्रोग्राम. अभी हम सीधा चल रहे थे, अब थोड़ा सा उल्टा भी चलते हैं कि हम रेंज को रिवर्स भी चला सकते. फाइन. जैसे काउंटडाउन होता है ना हमारा. अच्छा, काउंटडाउन और कहाँ पर देखा हुआ? टेल मी व्हाट हैपेंड. हैव यू सीन द काउंटडाउन समवेयर एल्स? राइट नाउ आई एम टेकिंग द लॉन्च. ओके. न्यू ईयर, गेम्स. वेरी नाइस. और कहाँ पर देखा आपने काउंटडाउन होता हुआ? अपडेट होती है कोई चीज. वेरी गुड. फाइन. गेम्स.
Teachers stay to keep silence. Yes, very nice. Yeah, I'm counting from 3, 2, 1 and everybody is going to be silent. Reverse counting in maths class. Okay. Ma'am time देती होंगी ना कि I'm giving you time to solve the question. Very nice. Very good observation. Very good observation. Excellent. ओके सो देखो अब यहां पर भी हम लॉन्च खेल रहे हैं लॉन्च में क्या है सी दिस वे सो व्हाट आई हैव डन आई हैव गिवन द स्टार्ट पॉइंट एज 5 लास्ट स्टॉप मैंने 0 दे दिया एंड नाउ आई एम रनिंग द काउंटर नेगेटिव जो स्टेप वैल्यू मैं दे रही हूं वो मैं नेगेटिव दे रही हूं फाइन सो it will go like fine it will go like this so let's answer few questions why is -1 used at the step -1 क्यों यूज किया हमने गिव मी द आंसर क्विकली टू काउंट बैकवर्ड क्योंकि अब हमने बैकवर्ड काउंट करना है वेरी गुड बिकॉज ऑफ द रिवर्स काउंटिंग बिकॉज इट इज बैकवर्ड वेरी नाइस एंड why is 0 not printed in the output 0 क्यों नहीं प्रिंट हुआ because yes range stops before the stop value हमने 0 दी थी और उससे एक स्टेप पहले ही रुकना था तो 1 पे वो रुक गया क्योंकि हम बैकवर्ड काउंटिंग में आ रहे थे वेरी गुड what if step becomes -2 tell me if I am making this step -2 then what will be the output guess the output 5 3 and 1 very good so 5 3 1 launch very nice how many times will the loop run in the initial program if I'm talking about the initial program -1 how many types loop work 5 4 3 2 1 and launch yes so how many times quickly give me the answer 5 times 5 times loop present हुआ and last में उसने print कर दिया launch okay very nice where do we see countdown in real life that we have already discussed you have said rocket launches new year celebrations sports race in class quiz timer when your teacher says the quiz microwave oven also है ना all these things happen so congratulations you have learned how to make Python repeat task fine आपने याद सीख लिया कि हमने Python को कैसे सिखाना है कैसे टीच करना है कि how to take decisions और how to repeat task very good yes Antakshi also so this is the let me get back to my presentation again what we have done today so this is a quick recap of what we have done today we have learned the conditional statement if else if and in loops we have learned about the for loop range function and how step values excellent yesterday we learned how to talk to Python and today you taught Python how to think and repeat fine so before we end today's session and even today this times 2 code today was the last session and we will meet next year in the month of May and June again with different programs and different things.